What a win! What a fantastic turnaround by India. This is an incredible win in an incredible setting. ठीक है, ये ऐतिहासिक जीत है इंडिया की लॉर्ड्स के स्टेडियम में। इसी साल जनवरी में इंडिया ने कॉन्कर किया सिडनी, फिर कॉन्कर किया क्याबा एंड नाउ लॉर्ड्स। वॉट अ टर्न अराउंड, क्या कमबैक किया है इंडियन टीम में। तीसरे चौथे दिन तक तो हम कहीं थे भी नहीं और पांचवें दिन पे जो पलटी मारा है, वाओ! एकदम से जैसे जज्बात पलट दिया, जिंदगी पलट दी। आई अंडरस्टैंड देयर वाज अ लॉट ऑफ गुड बैटिंग इन द गेम। आई अंडरस्टैंड Joe Root had 180, KL Rahul had 129, but this match has been won by the bowlers. I don't care what you say, I don't care what your opinion is. मुझे लगता है ये गेम बॉलरों ने अच्छी बैटिंग करके और बॉलरों ने बहुत अच्छी बॉलिंग करके इंडिया को जिताया। लेट्स टॉक अबाउट डे 5 क्विकली। जब दिन की शुरुआत हुई थी तब ऋषभ पंत 181 for 6, ऋषभ पंत ऑन द क्रीज, ही लुक लाइक इंडियाज लास्ट होप। दिन की शुरुआत में ऋषभ पंत थे और वो एक अकेले ऐसे बैट्समैन लग रहे थे जिसके ऊपर इंडिया रिलाई कर सकता था, क्योंकि उनके बाद आने वाली प्लेयर्स की बैटिंग पे आप ज़्यादा रिलाई कर नहीं सकते। सबको ऐसा लगा था, मुझे भी, कि अगर ऋषभ पंत आउट हो जाते हैं तो उसके बाद सब टीम एक के बाद एक ऐसे ढर करके गिर जाएगी, पर ऐसा हुआ नहीं। ऋषभ पंत बेशक आउट हो गए, लेकिन उसके बाद जो बैटिंग हुई है, आई थिंक इंग्लैंड वहीं पे गेम हार गया। 8 wickets down and then step up VVS Lakshman and Rahul Dravid 2.0. Mohammad Shami and Jasprit Bumrah made 89 runs for the 8th wicket, frustrating England to the core. And I think that is definitely where England lost the game in their heads. And that's where you lose it first. You lose it on the pitch later, but you lose it in the head first. And that partnership made England do just that. Mohammad Shami scoring a half century at Lord's, making a almost 90-run partnership for the 8th wicket with Jasprit Bumrah. That in itself has to be one of the greatest achievements of tailenders batting against England at Lord's. The bowlers were getting anxious because they could not wrap up India's tailenders. 2 wickets they couldn't take, which kept piling more and more misery on for England. The batsmen and the other English players in the field looked confused and they were wondering what will happen next almost all the time. And I think that's where their heads went. और आप टेल एंडर से इससे अच्छा बैटिंग की उम्मीद कर भी नहीं सकते। आप ये नहीं सोचोगे कि टेल एंडर 4 छक्के मार देंगे, 10-15 चौके मार देंगे, ब्यूटीफुल स्ट्रेट ड्राइव, ब्यूटीफुल कवर ड्राइव्स, ऐसा सब नहीं होगा टेल एंडर्स की बैटिंग। टेल एंडर्स की बैटिंग से हम एक ही चीज़ चाहेंगे कि वो अपना विकेट बचा के रखें और धीरे धीरे रन मारते रहें, जो कि बुमराह और शामी ने बहुत अच्छी तरीके से किया। टेल एंडर से आप यही उम्मीद कर सकते हो कि विकेट बचा के रखें और जितने हो सके ना, बैट्समैन ने नहीं किए रन्स तो आप एंड में जितने हो सके आप थोड़े बहुत कंट्रीब्यूट कर दें, तो बॉलर्स को मज़ा आएगा बॉलिंग करने में बाद में। और क्योंकि ये थे ही बॉलर्स सारे, तो उनको पता था कि और रन्स तो मारने पड़ेंगे क्योंकि बैट्समैन ने किए नहीं हैं, तो थोड़े हम रन मार लेंगे तो हमको बाद में बॉलिंग में अच्छा रहेगा। इफ़ यू रीड द न्यूज़पेपर्स एंड इफ़ यू रीड द इंटरव्यूज दैट इंडिया हैज़ बीन प्रैक्टिसिंग with their tailenders on how to bat. Bowlers are getting batting practice. It's very, very unique. That is not heard of a lot in international cricket, but India is doing it, and you can see how handy that is coming now. Shami and Bumrah showed that they can bat. Ashwin, if he plays, he's got a few centuries of his bat in his career, you know. And this just proves that to win and to stay at the top requires so much more, that at one point you reach a saturation level, and India have gone even beyond that. They have looked at how can we improve this even better, and they are now preparing their tailenders to bat, which is so unusual, but it's working out. Then came India's bowling. जब इंडिया bowling करने बाहर आए ना, तभी 2 आउटकम पॉसिबल थे, या तो इंडिया विन या तो मैच ड्रॉ। ये 2 ही आउटकम थे। 4 hours of play left on the final day, and England needed about 270, which was realistically not going to happen. So the one and only aim the English players had was to see this game out and get a draw. इंग्लैंड जीतने वाली तो थी नहीं, 4 घंटे में वो लोग 350 रन के आसपास नहीं करने वाले थे अनलेस वो T20 मोड में खेलते। तो एक ही आउटकम पॉसिबल था इंग्लैंड के लिए, वो था ड्रॉ। और उनको भी ये बात पता थी, वो ड्रॉ के लिए ही खेल रहे थे, पर ये बात इंडिया के बॉलर्स को मंजूर नहीं थी। 4 घंटे में, विद इन 4 hours, इंडिया हैज़ रैप्ड अप इंग्लैंड फॉर 120। 120 में इंग्लैंड की पूरी टीम 4 घंटे में ऑल आउट कर दी। वाह,
I thought England have enough batting and enough depth in their team to see out 4 hours of that fast Indian attack. The nervousness had started to creep in, and bear in mind the fans are back in the stadium as well, so the anxiousness was starting to build in the stadium, and when England came out to bat you could see they are batting with that pressure. 120 all out, that is I think an embarrassing score if you ask me. 120 पे all out हो जाना at home for England, ये शर्मनाक हार है एक इंग्लैंड के लिए. आई थिंक लास्ट डे पे तो पूरा दिन इंडिया के नाम रहा, बैटिंग में भी और बॉलिंग में भी. ऑन द लास्ट डे यू कुड सी द एफर्ट और द लैक ऑफ इट फ्रॉम द इंग्लिश. Day 1 was good for India, KL Rahul's century. Day 2, England's bowlers had wrapped up India for about 364. They came out to bat, they scored 391 themselves. But even till then, I'm saying even till the beginning of day 5, nobody thought India is going to win and win like this. So just like that, India complete a miraculous turnaround on day 5 to win a beautiful game of Test match cricket. This is Test cricket at its entertaining best. यही होती है टेस्ट मैच की खूबसूरती. 5वें दिन की शुरुआत तक किसी को नहीं लगा था कि इंडिया जीतेगी और ऐसे जीतेगी. A fantastic victory for Team India in this 5-match test series. They lead the series now 1-0. But England can learn from this and they will come back stronger. That is a fact. इंग्लैंड एक ऐसी टीम है जो बहुत आसानी से अपनी बेइज्जती सहन करेगी नहीं, and India need to remember that. They do not need to let their guard down. They need to remember England are at home. They're playing for a lot more. They will come back stronger. And so if both the teams get their A game out, one thing is for sure that we are going to get some amazing, some beautiful test match action for sure. The next match, the third match of this 5-match test series, is at Leeds in Headingley, and I will see you in another video for that one.